Hello everyone, welcome to prepguruu, the online platform for CUET, right? Today I am going to take second session of Jumbles, right? In the previous session of Jumbles, we have learned about how to find out the opening statement of any jumbled paragraph, right? Suppose if I talk about tackling this question, am I audible to all of you? Am I audible? Folks on Zoom, am I audible to all of you? Say yes or no. Yes. Okay. Fine. Now, if you say parajumbles, see what is parajumble? Parajumble is like you will get 5 to 6 statements or 4 to 5 statements, but all are jumbled. You have to arrange them in a proper order. All sentences are the part of the same paragraph, but the sentences are jumbled. Upar niche kar diya gaya hai, and you have to find out the correct order. What would be the correct order of that particular sentences, right? Now, in terms of finding out parajumbles, see, if you are doing any kind of exercise, in the eyes of competitive exam, time management is very important, right? Suppose if you are not able to manage time, then you cannot cope up with the competitive level of the CVT or any other competitive exams, right? So you have to manage the things within the given time, right? So in terms of time management, in terms of time saving techniques, let's understand how to deal with parajumble. Suppose if any student don't know how to tackle this kind of questions and he gets a paragraph, and the question is what of parajumble and all are jumbled. Suppose sentence A is jumbled, B is jumbled, C is jumbled, D is jumbled. Now what? He will read sentence number 1. He will read B, C, D. Now, he might get the first sentence. Why? Because it mostly starts with noun. But again, the competitive level is high. So it might be possible that sentence A also takes noun, sentence C also takes noun. So he might be confused that whether to go with A or C. But if I talk about finding out the other things, he will revisit the sentences, and he will do like this, that D ke saath to sir A hi jayega, right? Means D and A are what? Mandatory pairs. And now he will think a lot, and then he again read the sentences to pair those things. But the thing is, if you are reading one sentence 2 to 3 times, then you are wasting time, right? I'm not saying that you cannot do the sentence or not tackle the question, but if you are taking a longer time as compared to the competitive level, then it is of no use. Suppose you have solved a parajumble questions in 10 minutes, one question in 10 minutes, there is no use. You have wasted the time of other questions, right? So there is no use of that particular correct answer, right? So do the things accurately, but managing time. So how to manage the time, इसको हम लोग discuss करेंगे, and we will understand the methods, right? So let me give you the briefings of previous class. Suppose if I talk about parajumbles, so these are parajumbles means 4 to 5 sentences, all are jumbled. And if I talk about the approaches, the best approach is what? I'm going to tell you, yes. When you are going to find out, or you are going to do the parajumbles thing, first of all, you should be efficient in finding out what? In finding out the opening statement, right? And how will you find out the opening statement? These are the things, right? Just read 5 to 6 words. Just read 5 to 6 words of 5 to 6 words of each sentence. Means sentence A, sentence B, sentence C, sentence D, right? Only 5 sentences, 5 to 6 words, right? Your range is what? 5 to 6 words, not the whole sentence. If you read the full sentence, then it would be a problem for you, that you will waste time. You will reread the sentences so many times, right? So read the sentence. See, mark A, B, C, D, right? Now
if you are reading 5 to 6 words, and if you see in the range of 5 to 6 words any noun, then make a point over the option. But if you see these elements in within the range of 5 to 6 words, then make a what? Cross. Suppose if you see the sentence starting with this, right? Starting with this means he, she, it, we, you, they, this, these, all these are what? The pronoun elements. And what would we do? You will make a cross. Why? Because this cannot open the sentence. Your primary importance, or you can say your primary step should be to find out the opening statement, right? Now, if you are eliminating these things, eliminators are what? Pronouns, concluding words like so, hence, therefore. We cannot give, or you can not, you can say that we cannot conclude the sentence in the very beginning part, right? We cannot use concluding or conclusion indicators in the opening statement. That's why we will eliminate it. C is what? Continuing words, and also moreover, right? Now, if I say short expressions, so short expressions means what? If I say the expressions like the point is, comma, the fact is, comma, the reasoning is, comma, right? The reality is, comma. These are what? These are short expressions which cannot be used at the beginning portion of the para-jumbles, or you can say paragraphs, right? So it would be eliminated. E is what? Long portion starting with inverted comma. So obviously in most of the cases it is what? It is somebody's statement. And if somebody's statement is here, then after that statement it would be like he said. He said. So he said is what? It cannot come in the first portion of this paragraph, right? So we have to keep this in mind, and we have to consider certain options accordingly. Suppose we are left with only two options, A or C. Then what will you do? You have to pick the opening statement. Okay. So in that context, I was talking about the combo. If you are getting general and specific statements, right? General and specific statement. General means what? Which is broad. Broad means what? Applicable to majority. Like मैं India की बात कर रहा हूँ, country level talks कर रहा हूँ, right? And specific is what? For para-jumble point of view, say you can take it as a person specific sentence, right? Now, if you are getting one sentence generic, suppose it is talking about the country, right? And specific, is it talking about what? A certain person, Peter, Sam, like this, right? Then which would be the opening statement? General. Always think like that our paragraph moves what? From general to specific. Our paragraph moves from general to specific, right? In the earlier days, in school days, the paragraph will be like what? Specific to general. Specific means what? Talking about a specific incident, specific people. Once upon a time, there was a boy in a small village. This is what? Specific. And at the end portion, it would be like the moral of the story is. Then that moral, that generic thought is given at the last portion in your school days literature books. But now when you are reading, or you can say when you are preparing for competitive level exams, your paragraphs are from what? Social issues. Social issues what? Are described in newspapers, editorial section. And if you see, if you read the articles, the flow of the passage is what? General to specific. Not specific to general. It is mostly general to specific. Means author will give his main idea first. Suppose he is saying life is a part of a struggle. He will say it at the very beginning level of the passage. Then he will try to justify that statement by giving examples and justifications, expert comments in his later parts, right? Now, in that context, general should be preferred. Sorry. Suppose if you are getting the combo of general and general, right? Means आपको remaining sentence में general और general दोनों मिल रहे हैं. Then what? Compare the generic statement and go with that statement for opening sentence, which is more generic, right? Suppose if I talk about teacher, students, school, university, these kind of terms, and there is a sentence which includes education,
then education would be come at priority. Why? Because it is the head. Under this head, school, university, college, student, teacher, all comes, right? So in terms of higher authority, in terms of power, you have to compare the generic statements. Now go with the more generic statement. Now suppose you are getting the combo of specific and specific, means the whole paragraph is discussing about Narendra Modi, then what? Or any person, then you have to pick that person which is at the higher authority, means more powerful person, right? Who has higher authority, higher power, right? Now, so this was the briefing. Now let's begin with the second part. Now, my question is to all of you: have you tried finding out the opening statement in other cases of parajumble questions? Anyone? ट्राई किया था आप लोगों ने? हैव यू ट्राइड ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करने के लिए विद दैट मेथड? ओके, वेरी गुड केतकी. ठीक है, उस मेथड को, मींस इस मेथड को अप्लाई कब करना है? व्हेन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड व्हेन यू आर गेटिंग पैराग्राफ्स अबाउट व्हाट? पॉलिटिकल एरिया, इकोनॉमिकल एरिया, राइट? बिजनेस रिलेटेड, सोशल इश्यूज. बट अगर राइटिंग पैटर्न, मींस इफ यू आर गेटिंग राइटिंग पैटर्न ऑफ व्हाट? If you are getting two categories of paragraph, like action sequence, means narrative writing जो भी लिखी होगी, right? Action sequence written in narrative, right? And the second passage is what? Chronology. So these two category of paragraphs are what? Exceptions. These two are what? Exceptions. इनमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, इनमें अपनी कॉमन सेंस यूज करिएगा. Chronology is what? In ascending orders, means year wise events are described in that portion, right? And you have to go with the smallest year. With the smallest year means what? Suppose if you are getting the events starting from 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 22, so which is the least year, means what? Which is the smallest year? 2001, right? 2001 से स्टार्ट हुआ है, तो गिवन ईयर्स में से सबसे छोटा ईयर पिक करना है फॉर द ओपनिंग सेंटेंस. एक्शन सीक्वेंस, कहीं फायर का सीन डिस्क्राइब्ड है, एंड इफ यू सी द सीन ऑफ एक्सीडेंट वाज डिस्क्राइब्ड, तो उसमें पहले क्या क्या हुआ, देन क्या हुआ, पहले लोग इंजर्ड हुए, देन एम्बुलेंस आई. लॉजिकली सोच के यू हैव टू पिक द और अरेंज द सेंटेंसेस इन दीज टू कैटेगरीज. बट जिसमें कोई स्टोरी ही नहीं है, उसमें आपको ये मेथड अप्लाई करना. और मोस्टली यही पैसेज आते हैं रीअरेंजमेंट क्वेश्चन में. कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी दे देता है, राइट? नाउ लेट्स सी how to find out the second sentence after rearrangement. Second sentence. See, you have suppose you have find out, or you can say you have learned how to pick the opening statement from the method, right? Now, after finding out the first opening sentence, see, एक चीज ऑनेस्टली बताना, जैसे आपने अभी पॉइंट क्रॉस किया था पिछली क्लास में, राइट? एंड इन दैट मेथड यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट द ओपनिंग सेंटेंस. बट जब आपने ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट किया था, तो ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करते वक्त हैव यू थॉट अबाउट द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ? नो, हमें वो करना भी नहीं था. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एलिमेंट, दैट व्हिच सेंटेंस कैन स्टार्ट द पैरा. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैसेज? वी डोंट केयर इनिशियली at the time of finding out the opening sentence. वो हमें टेंशन लेना भी नहीं चाहिए at the time of finding opening sentence, right? अगर आपने टेंशन ली तो आप other sequence या other mandatory pairs के पीछे चले जाओगे, and it would be what? Time taking, right? Now opening sentence ढूंढ लिया. Now मुझे opening sentence ढूंढते वक्त तो ये नहीं पता था कि what is the topic, but when you are going to find out the second sentence after rearrangement, तो अब when you read this sentence क्या लिखा हुआ है?
read the sentence carefully. Read the opening sentence carefully, right? And you will definitely get your topic of the passage, right? अब ध्यान से सुनना. The continuing sentence of the opening sentence will be the second sentence, right? Continuing sentence means what? मैं अगर आपको पैराजम्बल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेथड बता रहा हूं तो अप्लाई दिस मेथड इन पैराजम्बल क्वेश्चंस ओनली, राइट? तो मैंने बोला कि पैराजम्बल पॉइंट में मैक्सिमम क्वेश्चंस में, पैराजम्बल क्वेश्चंस में, in maximum questions, in 99% questions, what happens? Author cannot give the full introduction in one sentence only. He must need what? Other sentences also. Means अगर मुझे ये बताना है कि what is economy, right? Suppose I am writing a passage on economy. तो मुझे अगर economy पर अपना passage लिखना है तो in terms of introduction I need at least two sentences. At least two sentences. मुझे two sentences चाहिए ही चाहिए. तो आपने opening sentence ढूंढ लिया point cross से. तो आपने जो भी स्टेटमेंट पढ़ा है ओपनिंग में, इससे इसका कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट क्या होगा? इट वुड बी सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. मींस 1 and 2 का कॉम्बो विल गिव यू व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग इन मैक्सिमम केसेस ऑफ पैराजम्बल्स. ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट सेंटेंस में उसने थॉट अपना दिया और वो कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. दिस इज नॉट पॉसिबल इन पैराजम्बल क्वेश्चंस. ठीक है? नाउ जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा तो यू कैन मेक सी, हमेशा क्या करना, ए बी सी डी ऐसे, मतलब मेक इट अ मेथड, ए बी सी डी ई ऐसे अपने कॉपी में या रफ शीट में लिख लिया. एंड आपने ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने के लिए पॉइंट क्रॉस किया था, राइट? ठीक है. फिर आप इधर का प्लेस बचता है, उसमें सेकंड सेंटेंस ढूंढने के लिए आप पॉइंट क्रॉस कर सकते हो. 1 and 2 सेंटेंस पॉइंट क्रॉस से ही मिलते हैं. और बिलीव मी, अगर आपकी मींस आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम. ठीक है? एंड आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी. दैट इज फॉर श्योर, राइट? नाउ हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी प्रैक्टिकली विद द क्वेश्चंस. ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिया था ना, इसमें हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट ढूंढते हैं, राइट? तो यू फाउंड द फर्स्ट सेंटेंस. व्हिच सेंटेंस वाज द फर्स्ट सेंटेंस? कैन यू टेल मी? बता सकते हैं आप लोग who were in the previous class? Can you tell me? गौरी, केतकी, अद्विका, which was the opening sentence in this question? STEM. Yes, Tusha, very good, right? ठीक है. तो हम लोगों ने ओपनिंग कैसे ढूंढना था? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट क्रॉस किया था हमने, तो इट जैसे ही देखा मैंने क्या किया? क्रॉस कर दिया. B, तिरुवरूर is a noun. I have made a point. C, the bigger one means what? Smaller one भी कोई रहा होगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस. D, these means what? These is what? Pronoun element. Then what? Cross. Both is what? Continuing word. Cross. According to Professor P. Samruti point. तो professor is what? Person हो गया. And this sentence is pure generic. इसमें person attached नहीं है. जिसमें पर्सन अटैच नहीं होते हैं, प्लेस होते हैं, नेम होते हैं, दूसरी चीज होगी, देन दैट वुड बी व्हाट? प्योर जेनेरिक सेंटेंस. सो दिस वन वुड बी द ओपनिंग सेंटेंस. ठीक, ये ओपनिंग हो गया, राइट? नाउ अभी मैंने कोई भी टेंशन ये नहीं ली कि पैराग्राफ. यस, वेरी गुड त्विषा, कुशविंदर, गौरी, केतकी, राइट? बी इज द राइट आंसर. बी इज द ओपनिंग स्टेटमेंट. बट हमने ये टेंशन लिया कि पैराग्राफ का टॉपिक क्या है? नहीं लिया, और मुझे ओपनिंग मिल भी गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मेथड, राइट? नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सी दिस. तिरुवरूर हैज, अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा, अभी तक मैंने पॉइंट क्रॉस खेला, राइट? नाउ तिरुवरूर हैज अ रिच हिस्ट्री फॉर यूजिंग रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट वाज नो वंडर व्हेन वी सॉ द रेयर पंचमुख वाद्यम, बरी नयनम एंड कोडुगुट्टी देयर. दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? A place called Tiruvarur, and it is talking about 3 musical instruments. See this: Panchmukh Vadyam, Bari Nayanam, and Kodukutti there, right? 3 musical instruments. How many instruments? 3. तो अब मैं इसको अपने माइंड में रख के कि 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है, इस 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कौन कंटिन्यू करेगा? वही सेकंड सेंटेंस होगा, राइट? नाउ
If you see, तो again you can play the game of point or cross. See this. It is. It क्या फर्स्ट के बाद बी के बाद आ सकता है? नो, बिकॉज 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मुझे कनेक्ट कराना है. इट किसने को कनेक्ट कर पाता है? ओनली वन. वन को कनेक्ट कर पाता है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस. बी तो ओपनिंग ही था. सी द बिगर वन. बिगर वन मीन्स व्हाट? स्मॉल और बिग, टू ही तो हुए. मुझे 3 चाहिए थे. इट इज व्हाट? गॉन. डी. दीज कितने के भी कनेक्ट कर सकता है? 2 हो तो भी, 3 हो तो भी, 4 हो तो भी. तो मैं इस पर क्या कर लूंगा? पॉइंट बना लूंगा. ई. बोथ कनेक्ट्स व्हाट? 2 थिंग्स. अगेन वी नीड व्हाट? द कनेक्टर ऑफ 3. देन व्हाट? ई इज गॉन. एफ. ये तो अलग ही बात थी, ये तो सब्बमूर्ति की बात थी, इसको तो हटा ही देते हैं. राइट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. नाउ विच इज द सेकंड सेंटेंस? Which is the second sentence? The second sentence is D. Second sentence is what? D. तो अभी हमें सीक्वेंस मिला कि after B it comes D. After B it comes D. Very good, Ketki. Right? Are you getting the sense? तो बाकी केसेस में can you tell me the second sentence? इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें. तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सेम क्वेश्चंस में ही सेकंड ढूंढने कर रहा हूं, जिसको आप लोगों ने पहला ढूंढा था. राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, मान लो ये था, एग्जांपल 2 था. आई रिमेंबर दिस. इसमें ओपनिंग क्या था? व्हाट वाज द ओपनिंग सेंटेंस? F. Very good. F was the opening sentence. Why? Because professor is what? Professor is in higher authority as compared to scholar, right? As compared to scholar. See, right? So professor से मैंने start किया था, right? This would be the opening sentence. Now, can you tell me what would be the second sentence? What would be the second sentence? F is the opening. Read this carefully. Robert L. Belknap was a long-time Columbia University professor and the author of 2 important studies of Dostoevsky's brothers Karamazov. Right? So it is talking about what? Professor. तो अब आपको ढूंढना क्या है? You have to search the statement about professor only, right? E. Okay. Any other answer? A. Okay. Any other answer? Any other answer? Any other answer? A. Okay. Esther is saying A. Kurangi is saying A. Okay. Advika A. Okay, means the main game is between A and E, right? Any other option? Okay, A and E. I will take it as your answers. A or E, right? Now see, Robert L. Belknap was a long-time Columbia University professor and the author of 2 important studies of Dostoevsky's. Means it is talking about what? Professor whose name was what? Robert L. Belknap. तो हाँ, ultimately our mind goes with this statement कि भाई Belknap की बात हुई है, then this sentence might be the second sentence after rearrangement. But the thing is, मैंने क्या बोला था कि अगर आप पॉइंट बनाओगे तो आपने इस पे पॉइंट बनाया होगा, राइट? तो इस पर भी तो बनाया होगा, बाकी तो कटी है. मींस अदर्स आर व्हाट? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट? बट आपके पास अगर 2 सेंटेंस है तो ट्राई टू फाइंड आउट द इमीडिएट कनेक्टर, राइट? ठीक है. नाउ बोथ आर टेलिंग अबाउट Belknap, बट आप सोच के देखो
जैसे कॉमन लॉजिक भी होता है, मींस क्या मैंने कहा था फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस विल गिव यू द इंट्रोडक्शन पार्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ पैराजम्बल्स। तो आप सेकंड सेंटेंस जरा देखो, अगर आप ई को सेकंड बना रहे हो तो क्या इतनी ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे उसमें? सी दिस, जमाने में प्रिफिटनी नोट बाय बेल्कनैप ड्यूली थैंक्स द वुड्रो विल्सन फेलोशिप program, the Bellagio Center, the Kennan Institute at the Smithsonian Institute at the John Simon, means इतनी ज्यादा चीजें इसमें, इतने ज्यादा एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में? इज इट पॉसिबल? नो। फिर भी मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने सोचा कि ये सेकंड हो सकता है। लेट्स सी द ए, कंपेयर तो करोगे ही ए से। नाउ सी, इन 2011 he presented the Leonard Hastings Scoff Memorial lectures given by professor at Columbia, and these form the basis of this posthumous book and analysis of the plot in drama and fiction. तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, तो इन गिवन इंट्रोडक्शन वी यूज व्हाट, ईयर्स आल्सो, ये बिगनिंग पार्ट होते हैं ना, राइट? ठीक है, देन व्हाट इफ यू कंपेयर दिस स्टेटमेंट विद दिस स्टेटमेंट, व्हिच इज द इमीडिएट कनेक्टर? ऑब्वियसली ए, इसमें बहुत एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A is the right answer. Are you getting my point? So if you are getting two sentences connected with the opening sentence or opening topic, then always compare both two remaining sentences and find out the immediate connector. एक immediate connector होगा और दूसरा क्या होगा? That would be in the conclusion part or taking long elements. बहुत ज्यादा elements होंगे उसमें, तो अगर बहुत ज्यादा elements हैं किसी में तो थोड़ा रुक जाना डिसीजन लेने से पहले। वाई? इंट्रोडक्शन पार्ट में इतने ज्यादा एलिमेंट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या था? क्रोनोलॉजी मैंने कहा था कोई ट्रिक नहीं लगती। ओपनिंग सेंटेंस वाज व्हाट, 2008। इसके बाद कौन सा सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा? बी। सेकंड सेंटेंस वुड बी बी, इसमें नो लॉजिक, राइट? नाउ ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एंड इफ आई रिमेम्बर द ओपनिंग सेंटेंस वाज एच, मींस वी वर कंपेयरिंग सेंटेंस ए एंड एच। वी वर कंपेयरिंग व्हाट? वी वर कंपेयरिंग सेंटेंस ए एंड एच, एंड ए वाज इंक्लूडिंग यूएस एंड एच वाज इंक्लूडिंग व्हाट? ग्लोबल। Global is bigger as compared to US, right? That's why H is the opening statement. H is the opening statement, means H starts the paragraph, right? Suppose if this is the first sentence, then can you tell me the second sentence in this case? Okay, this initiative, okay, global technology major Apple on Wednesday announced a new initiative. Okay, you have picked that with the word initiative. Okay, let's see. Global technology major Apple on Wednesday announced a new initiative to support engineering talent and accelerate growth in India's iOS developer community. Okay, let's see. A is saying the US-based company will establish a design and development accelerator in Bengaluru. ठीक है, तो इसमें मेनली क्या ढूंढना था? ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेजर एप्पल ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव। तो एप्पल ने क्या किया? ग्लोबल टेक्नोलॉजी की बात किया था, उसने वर्ड यूज किया था, एंड अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू सपोर्ट इंजीनियरिंग टैलेंट। और इसमें अगर आपने डी पिक किया है द सेकंड सेंटेंस, यस दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एडिशनल स्पेशलाइज्ड सपोर्ट फॉर द डेवलपर्स हु मेक applications for the Apple's iOS operating system, Apple said in an official press statement, right? Now दूसरा कोई सेंटेंस आपके कंसिडरेशन में आया था? यस गौरी, ए। हाँ, ए ऑब्वियसली आएगा, जैसे मैंने बोला था कि आवर पैराग्राफ मूव्स फ्रॉम व्हाट, जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल वाले टर्म्स, ग्लोबल तो था ही, यूएस भी तो जनरल था, तो ग्लोबल के बाद बड़ा कौन है? यूएस वाला स्टेटमेंट, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, ठीक है?
So it is saying the US based company will establish a design and development accelerator in Bengaluru, right? This can also be the sentence number 2, right? तो इन two sentences को अगर आप compare करो तो which is the correct answer? See, अगर आप ऐसा देखो, ऐसा केस when you are comparing, तो in terms of comparison एक चीज का याद रखना कि अगर एक sentence pure generic है, if one sentence is pure generic and the second sentence means the other sentence which is in comparison, उस सेंटेंस में अगर थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पर्सन जा रहा है तो उसको अवॉइड करना और प्योर जेनरिक को सेलेक्ट कर लेना. दिस इज द बेटर वे टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. सी, जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मैंने पढ़ा दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एडिशनल स्पेशलाइजेशन. एप्पल सैड, एप्पल सैड मतलब क्या हो गया? somebody's statement हो गया ना, ठीक है. बट जरा इसको पढ़ो, द यूएस बेस्ड कंपनी विल एस्टैब्लिश, कंपनी के नेम पर इसने अपना स्टेटमेंट बोला, तो which is more generic statement? This. So A is the second sentence after rearrangement. Second sentence. Clear? Ketki, is it clear? Tusha, the correct answer is what? A, not D. Not D, right? Now, let's check the first. मतलब आप लोग ये बताओ कि मतलब have you practiced for the opening statement? Means are you ready to face the challenge in finding out the opening sentence? जैसे second का भी मैं नहीं बता रहा हूँ, second अभी मैं सिखा रहा हूँ, but opening sentence ढूंढ लोगे? Say yes or no? Means कुछ confidence है? Are you ready to face the challenge? Okay, okay. Gauri is saying yes. Yushinder, yes. Okay. ठीक है. Kurangi, okay. Tusha, okay. Good. Esther. Okay, 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 okay. Means all of you are ready to face the challenge for one opening sentence, ना? ठीक है. चलो अभी second की थोड़ी practice करके फिर मैं कुछ challenging passages दूंगा आपको, right? To find out opening, ठीक? Second का कुछ और देखते हैं. Suppose if I say this one, ठीक है. इसमें ओपनिंग क्या ढूंढा था? डू यू रिमेम्बर? ओपनिंग ढूंढा था हम लोगों ने. दिस वाज अ गुड लेवल पैराजम्बल केस. यस, ओपनिंग वाज बी, सोलर, राइट? नाउ कैन यू टेल मी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? सेकंड सेंटेंस, दिस वन वाज द ओपनिंग स्टेटमेंट. This one was opening, right? Okay, आंसर आ गए. Okay. See, I had discussed what? I had discussed that अगर एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, राइट? सपोज इट इज बिगिनिंग विथ अ टॉपिक, तो उस टॉपिक का दूसरा सेंटेंस जरूर होगा पैराजंबल के क्वेश्चन में, राइट? इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा मैंने देखा है, राइट? इंट्रोडक्शन वन सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो इफ यू हैव पिक्ड द वर्ड सोलर in the very beginning of the sentence, parajumble or paragraph case, to find out the sentence which includes only solar, not the subheads of solars. आप सोलर सिटी पर चले गए, कुछ लोग पैनल्स पर स्विच कर गए. मुझे बताओ, क्या कोई सेंटेंस आपको ऐसा नहीं दिखा जिसमें सिर्फ सोलर लिखा हो और सिर्फ सोलर डिस्कस हो रहा हो? Okay, E is coming here. Let's see. This plunge occurs as researchers find new ways to make solar not only smaller. Yes, this is only about what? Solar. So solar पहले connect करो, then go to the further part, right? So the correct answer is what? E. E is the second sentence.
राइट। देखो इसको हम लॉजिकली पढ़ के भी कर सकते थे, बट द थिंग इज दैट मेथड मींस बेसिक मेथड विल वेस्ट योर लॉट्स ऑफ टाइम, मींस अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, हमें पढ़ के समझ के तो करना ही है, बट द थिंग इज कुछ ऐसे मेथड्स अप्लाई कर लें जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए, तो इट वुड बी बेटर फॉर कंपटीशन, राइट। सपोज इफ आई से अगर मैं लॉजिकली पढ़ूं तो देखो कैसे कनेक्शन बन रहा है, सोलर इज टेकिंग ऑफ मींस व्हाट ऑफ इज यूज्ड in terms of what separation, so solar is taking off as its prices have plummeted an estimated 70% since 2009 according to a September report from Lawrence Berkeley National Laboratory. Now this plunge इसी के लिए तो लिखा है, तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा, राइट। बट द थिंग इज हमने ये देखा कि अगर एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक जेनिक टर्म मेरे पास है, तो ये जेनिक टर्म यहाँ पर है, तो दिस इज द सेकंड सेंटेंस। और दूसरा रेस्ट ऑफ द आंसर किसने बताया था, एक ही ने बताया था, पैनल्स कैन नॉट बी द आंसर, व्हाई, पहले इसका तो मींस इंट्रो तो कंप्लीट कर ले, राइट। सो ए और सी इज रॉन्ग, क्लियर, ई इज द राइट आंसर, क्लियर, इज इट क्लियर, नो, ठीक है, नो, this was also a good case. Can you tell me the second sentence? What would be the second first sentence? First sentence was D, right? This one was the first sentence. Now, can you tell me which is the second sentence after rearrangement? Second. Yes. Hmm. Any answer? अच्छा, ये ई सभी का आंसर है इसके लिए। लेट्स सी। Entrepreneurial knowledge is essentially intuitive. It involves seeing and realizing a vision of, yes, बिल्कुल सही है, entrepreneurial knowledge के बारे में बात कर रहा था। yes. अब थोड़ा सा सेकंड का ट्रैक शायद आप लोगों ने पकड़ना शुरू किया है, राइट। मींस इफ यू आर able to find out the first sentence correctly, then after finding out the opening statement, when you are going to find out the second sentence after rearrangement, then you are focusing on the elements of the first sentence, right, and you are finding out the continuing element connectors, right। now आप लोगों ने कहा था कि यस यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज, सो आई एम गिविंग यू सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आपको फर्स्ट ढूंढ के बताना होगा, राइट। लेट्स सी। टेल मी द ओपनिंग सेंटेंस in this case, opening sentence. Okay, the answer is okay. All of you are going with B. Gauri says B. Advika says B. G. Okay.
एनी अदर आंसर? बी, सभी लोगों का बी ही है। ओके, जी भी एक आंसर है। एनी अदर आंसर? लेट्स सी। ए, इट, क्रॉस। गवर्नमेंट बैंक्स आर पॉइंट, they this these cross, the interest rate and terms point, but cross, the employees means person। मेरे पास सेंटेंस कैसा है? बैंक का है, मींस जेनरिक है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस, राइट? तो आई विल रिमूव दिस। गवर्नमेंट बैंक्स ऑफर पॉइंट। So there are three sentences which can start the paragraph. Let's see. Government banks are more trustworthy if you are considering taking a loan, long-term loan, right? Huh, it could be the answer. Let's see the next one. The interest rate and terms are decided by the Reserve Bank, and these national banks cannot make any changes by their own. Now what? इंटरेस्ट रेट की बात मैं पहले करूंगा या मैं एरिया बताऊंगा? सी, इफ यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट इज अ बिग टर्म। सपोज इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट, किसी भी चीज का हो सकता है, डिस्काउंट का, प्राइस का, राइट, प्रीमियम का। किस एरिया का इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ये तो पहले बताना पड़ेगा ना। वी हैव टू टेल द ब्रॉड हेड, द मेजर हेड ऑफ इंटरेस्ट, मींस किस चीज के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट ऑफ व्हाट, इन कंटेक्स्ट ऑफ लोन। लोन के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, राइट? सो मुझे टॉपिक का सेंस कौन दे रहा है, विच इज द बिगिनिंग पार्ट? मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट वाले सेंटेंस से स्टार्ट कर दूं? नो, वी हैव टू गेट द सेंस ऑफ व्हाट, द जेनरिक टर्म लोन। पहले लोन बोलूंगा, फिर बोलूंगा ना इंटरेस्ट रेट। सो अकॉर्डिंग टू, एज कंपेयर टू दिस पार्ट, डी क्रॉस हो गया बी से कंपेयर करने पर। नाउ व्हाट? लेट्स सी जी। गवर्नमेंट बैंक्स ऑफर लोअर इंटरेस्ट, अगेन लोअर इंटरेस्ट रेट, इन विच कंटेक्स्ट, इन विच एरिया? in area of discount, premium, profit, what? No, in area of loan। तो start कौन कर रहा है, टॉपिक कौन स्टार्ट कर रहा है? the topic is started by what? B। कि इसने देखो साफ साफ लिख भी दिया है कि गवर्नमेंट बैंक्स आर मोर ट्रस्टवर्दी इफ यू आर कंसिडरिंग टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। तो गवर्नमेंट बैंक ट्रस्टवर्दी किस कंटेक्स्ट में? इन टर्म्स ऑफ लोन, राइट? तो इट वुड बी व्हाट, द ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में, इसी पैराजम्बल केस में, इफ आई टेल यू टू फाइंड आउट द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो क्या बताओगे? बताओ। विच वुड बी द सेकंड सेंटेंस? द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट? नंबर बी, राइट? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यस, आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट, राइट? नाउ सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट इज व्हाट? हम्म, अच्छा, यहां पर एक डिफरेंट आंसर आया, जी एंड सी। जी एंड सी, ओके। सेकेंड सेंटेंस के लिए आंसर आया जी और सी, ओके। एनी अदर? लेट्स सी। इसको अब ध्यान से पढ़ना होता है, सेकंड को ढूंढने के लिए फर्स्ट वन ध्यान से पढ़ना होता है। गवर्नमेंट बैंक्स आर मोर ट्रस्टवर्दी इफ यू आर कंसिडरिंग टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। तो गवर्नमेंट बैंक पर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो इफ यू आर कंसिडरिंग टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। नाउ दे ऑफर, अब ये दे गवर्नमेंट बैंक्स के लिए लगा हो सकता है, ठीक है। दे ऑफर यू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल सीक एजुकेशन लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। तो हाँ, अभी तक लग रहा है कि हो सकता है, राइट? ठीक है। नाउ see the next one. Government banks offer lower interest rate. It is well known fact that the interest rate of government bank is much lower as compared to private banks, right? ठीक है, तो मुझे बताओ कि मुझे प्राइवेट बैंक्स वाला स्टेटमेंट कंसिडरेशन में रखना चाहिए था या पहले मैं गवर्नमेंट बैंक्स की बात कर ही दूं? मींस इफ यू फोकस ऑन द ओपनिंग पार्ट was including what? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को।
Opening part was including what? More. More shows what? Comparison. अब अगर more comparison show करता है तो G होगा या C होगा? Tell me. Clear? If we are drawing a comparison, then private banks have to be addressed. Yes, Abdika, वही मैं बताना ही चाहता था, right? So देखो ये चीज करनी होगी. Means if you are going to find out the second sentence, then you must read the first sentence carefully. देखो ओपनिंग ढूंढने के लिए मैंने कहा ही नहीं कि टेंशन लो. 5 to 6 वर्ड्स पढ़ा, क्रॉस किया, पॉइंट किया, क्रॉस किया, पॉइंट किया, राइट? ठीक है. बट सेकंड सेंटेंस ढूंढने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट वन, राइट? मोर ट्रस्टवर्दी मींस व्हाट? इससे जो कनेक्टेड सेंटेंस है उसको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा. तो व्हाट इज द कंपैरिजन पार्ट? प्राइवेट बैंक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जी इज द करेक्ट वन, राइट? नाउ this is easy. कैन यू टेल मी द राइट सीक्वेंस? अब देखिए सीक्वेंस बेस्ड मींस अगर आपको इस तरह से ऑप्शंस आते हैं तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज ओपनिंग ढूंढना आप जान गए हो, राइट? तो ओपनिंग का टेंशन लेके क्या करोगे आप? कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो. सपोज आपने ऑप्शंस देखे, ठीक है, तो ऑलरेडी गिवन ऑप्शंस में क्या करना है? सबका पहला एलिमेंट देख लिया, A, D, A, B, D, right? See the sentence. Which sentence can start the paragraph? तो A अगर दिया तो check it. Major drawback in our administrative system and procedures pertains to reward and punishment. हो सकता है अभी. D देखते हैं. Procedure and not objectives are treated as sacred. ये procedure not objectives means what? Are treated in which context? ठीक है. तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि D start कर पाएगा, right? तो cross B. To reward the honest means what? पहले इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होना चाहिए? रिवार्ड एंड पनिशमेंट. तब होगा ना टू रिवार्ड, राइट? सो बी इज गॉन, डी इज गॉन. द आंसर इज ए और सी. टेल मी, ए बी होगा या ए सी होगा? यही डिसाइड कर देगा आंसर. टेल मी द आंसर. ए बी और ए सी. ए बी और ए सी. टेल मी. यस, वेरी गुड एस्टर. A, B is the right answer. Why? Because C, you have to connect this one with this, right? So the correct answer would be A, B, C, D. Clear? तो अगर already arranged options आएंगे तो आपके लिए और easy होगा. But before coming to this portion, always practice the previous thing. Previous thing means what? आप सेकेंड सेंटेंस ढूंढ लो, राइट? आफ्टर फाइंडिंग आउट द सेकेंड सेंटेंस, 3, 4, 5 जो आपके रिमेनिंग सेंटेंस है उसमें आप मैंडेटरी पेयर्स लगाओगे. क्या लगाओगे? मैंडेटरी पेयर्स, राइट? एंड फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है. बट इफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्बिनेशंस करेक्टली, तो आप ऑलरेडी गिवन आंसर्स में कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे. दिस इज फॉर श्योर, राइट? ठीक है. तो practice this at your home, ठीक है? And I will show you some more questions on para jumbles. In that case or in that class, I will tell you the full sequence, how to prepare the full sequence of the para jumbles. But before that, आप 1 and 2 की प्रैक्टिस करिएगा. Means finding out the 1 and 2. ठीक है? ये सारे क्वेश्चन उठा लीजिए. सब में ओपनिंग और उसका कनेक्टेड ढूंढिए, ओपनिंग एंड कनेक्टेड ढूंढिए, राइट? ठीक है. Do this. Till then, thank you so much. Bye bye.